12C Business Studies, students of Vidya Mandir Commerce section. Under business study, there are two parts of this subject in 12th class. The first part, we are going to start first chapter, nature and significance of management, यानी प्रबंध का महत्व एवं प्रकृति. First of all, we have to define management. What is management? Do you think that whole universe is managed? Everywhere we can find management. Management is a group effort towards a certain work to achieve a certain goal. If there were no goal, there were no management. Imagine your Sunday routine. If there were, because on Sunday there were no have to go outside and on a certain time, you mismanage your whole day. So whether there is goal, there is management. Management is a group effort. It is not a single dimensional concept. It is a multi-dimensional concept. Management is a aggregate of multi-functions. When multiple functions integrated with each other towards a certain goal, then it is called management. Now, the concept of management. What is the concept of management? Concept of management is any particular work done with effectiveness and efficiency. Effectiveness and efficiency. Both, what does it mean? Effectiveness and efficiency. Like Sachin Tendulkar. When Sachin Tendulkar hit 100, it shows both that he has the ability, efficiency, and you never hear about that Sachin gets 100 on 158 balls. It's always 88 balls, 87 balls, 86 balls. Least time, on time, and least cost. On time and in least cost. That is called effectiveness and efficiency. Whenever Amitabh Bachchan hosts a program like Kaun Banega Crorepati, there were several actors who can perform better in various type of program, but Kaun Banega Crorepati, I personally think that Mr. Bachchan, as he chosen the way of performance and deliver his speech with that is no compare the word of effectiveness and efficiency. वो रामपाल यादव में नहीं आ सकता है कि आप रामपाल यादव अगर कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करता है, नो डाउट कि उनके पास वो एफिशिएंसी हो सकती है, बट इफेक्टिवनेस नहीं दिखेगा. तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों का मिश्रण है मैनेजमेंट. व्हेनेवर वी कॉल दैट एवरीथिंग इज मैनेज्ड, then we find that there is both effectiveness and efficiency, both shows at the same time. That is the concept of management. तो management effectiveness versus efficiency नहीं है. Actually management is effectiveness means in time, efficiency it means least within least cost, कम से कम लागत में और समय पर, कम से कम समय में जिस काम को हम बखूबी संपादित करते हैं वो पूरा मैनेज्ड वर्क कहलाता है. उसमें हम मैनेजमेंट करते हैं. वी प्लान आवर एवरी स्टेप विथ केयरफुली एंड दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. Now we turn on features of management. Features of management. First, management is a goal-oriented process. As I previously stated that without goal, management and goal. See this goal and management. Both are single aspect, double aspect of same coin. We can say कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.
whether there is goal, there must be a management, and whether there is management, there must be a goal. लक्ष्य के बिना हम प्रबंध नहीं कर सकते हैं, प्रबंधन हमारा होगा ही नहीं, हमारा इवन संडे का हमारा जो रूटीन है. और मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो जब तक कोई लक्ष्य नहीं, इसलिए स्टूडेंट्स को कहा जाता है फर्स्ट फिक्स योर गोल, देन यू कैन ओनली एबल टू मैनेज योर लाइफ, योर डे टू डे रूटीन. Thus, it is a prime feature, very prime feature of management that whether there is goal, there is management, and thus management is a goal-oriented process. Second, management is all pervasive, यानी प्रबंधन सर्वत्र है. आप हॉस्पिटल में देखते हो, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होता है, स्कूल का मैनेजमेंट होता है, आप होटल का देखते हैं मैनेजमेंट होता है. तो वेदर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क, देयर इज मैनेजमेंट, बिकॉज without management, a group of people can't work in the same direction for a same goal. They converted into a crowd, and crowd never perform any task. Management is all pervasive. It means whether either it is a hotel, hospital, a school, whether there is a group of people work, there must be a management. See, तीसरा है management is multi-dimensional. Whether management is multi-dimensional. Multi-dimensional means management has 3 dimensions: management of work, management of people, management of operation. As we know that BSF हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जब वो बॉर्डर पे रहता है तो वहाँ पर वो अपने स्टाफ को अलग उसका वर्क होता है. दे हैव टू बी लुक आफ्टर टेररिस्ट, दे हैव टू बी स्टॉप एंटी टेररिज्म. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वहाँ पे वर्क उनका अलग है, हथियारों के साथ काम करना है, खुफिया विभाग के साथ काम करना है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वहाँ पर उनके लोग सभी अपने हैं जिनको वो मैनेज करते हैं. एवरीवन वाज आर्मी ऑफिसर. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, उनके ऑपरेशन होते हैं, जैसे कारगिल ऑपरेशन हुए, कोई जैसे उड़ी का जो हुआ था ऑपरेशन, उसका अटैक का, तो देयर आर ऑपरेशन, तो दे वर डिफरेंट. लेकिन वही बीएसएफ अगर बाढ़ बचाव में एनडीआरएफ की टीम होती है, वहाँ पर मैनेजमेंट का वर्क अलग है, पीपल अलग है, वहाँ पे लोकल लोगों से सहयोग लिया जाता है, उनको मैनेज करना, फिर उस ऑपरेशन को मैनेज करना. वहाँ पे ऑपरेशन है डिजास्टर, जो हरासमेंट है, डिजास्टर है, उसको कम से कम किया जाए. तो होटल में ऑपरेशन अलग होते हैं, लोग अलग होते हैं, वहाँ पर काम अलग है. स्कूल में ऑपरेशन अलग होते हैं, वहाँ पे वंदना का है काम, शिक्षण कार्य संचालित करना है, एवरीथिंग. तो द डिफरेंट nature of work has different their ways, and according to that different ways and nature of work, we also have to manage differently that work, people and operation. But the sense of management was same. Thus it is said that management is multidimensional: management of work, management of people, management of operation. वही मैनेजमेंट है, उसी वही सेंस है, वही सब कुछ है. लेकिन हॉस्पिटल में अलग कार्य का मैनेजमेंट करते हैं, किया जाता है, वहाँ पे लोग अलग होते हैं, ऑपरेशन अलग है. वही मैनेजमेंट जब हम होटल स्कूल में जाते हैं तो फिर वहाँ पर अलग कार्यों का मैनेजमेंट है, पीपल है. दैट इज बट सेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड दस इट गेट एडजस्ट इटसेल्फ एट एवरीवेयर, एंड ड्यू टू दिस multi-dimensional, due to this management are all pervasive. Next, management is a continuous process. As we know that organization function, so goals were a continuous process. We are human beings and human beings are illustrative by nature, it is said by everyone, and never a human being gets satisfied with getting anything. So in this situation, after achieving a certain goal, there was just a reason of next goal in front of human beings or in front of any organization. And when there were not till end of goals, that goals were always achieved through a proper management, and thus management also become a continuous process. Management is a continuous process because goals were continuous. Goals were not going to be end. Next,
a group activity. As already previously I said that management is a group activity because management is not a single function which can be performed by a single people. Management is an integrated force of different functions like planning, organizing, staffing, directing, controlling. That 5 function integrated force. Management is the integrated force of 5 things: planning, organizing, staffing, directing, controlling. That 5 things is management. That 5 things. Management is a integrated force of 5 functions. Thus, it is called a group activity. Now, next, dynamic function. Management is dynamic because it change its form, its ability to perform according to organization. तो वो डायनेमिक है, वो चेंज होता है द सेंस और सेम. हमने वही ना कहा कि एनडीआरएफ जब काम करती है वही एनडीआरएफ को अगर बॉर्डर पे हम भेजते हैं या बीएसएफ को बॉर्डर पे रहते हैं तो उनके काम करने का अलग वहाँ पर ये होता है, तरीका होता है. वही बीएसएफ फिर बाढ़ के दिनों में हमें बचाव करते हैं, वहाँ पे उनका सेंस और उनका वर्क करने का तरीका अलग होता है. तो इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. इट गेट चेंज इट्स फॉर्म according to work, according to people, according to operation, and manage everything in a proper way with effectiveness and efficiency to take a certain goal. जहाँ का जैसा goal होता है वहाँ पर वो. The next, intangible force. Management can be felt. It cannot be touched. Management intangible force है क्योंकि मैनेजमेंट को आप महसूस कर सकते हैं. Whenever enter into any organization, I'm not going to state a particular organization, but you felt, जैसे आप अगर फोर्टेज में जाएंगे और पोलो में जाएंगे तो while you enter, you felt management, water management, the discipline, the sanitation, everything, the cleanness, everything surprise you. But while you enter into a government hospital, you also felt management. That's all. Next objective of management in next video.